Alright, how are you friends? This is Khurram. Today I'm going to teach you the earth movements. Guys, हम सबको पता है there are different types of movements that are occurring on the earth. उसकी वजह से क्या होता है, we are getting many of the various types of land forms and land features. So we all know that there are many of the forces which are responsible for the earth movements. And सबसे पहले हम उन्हीं forces को explain करने की कोशिश करेंगे, कैसे process होता है, क्या process होता है, what are the resultant features also. Alright guys, so earth movements, endogenic and exogenic features. Guys, as we know, Earth is continuously being shaped and reshaped by the agents of denudation, that is wind, water, glaciers and waves, so that our present landforms are very varied and diverse. Guys, हम सबको पता है कि जो हमारा Earth, हमारी जो धरती है, that is continuously being shaped and reshaped by the agents of denudation. आपको सबको पता होगा, there is a process called weathering and erosion. हमारे पास weathering होती है, we have the particular landform which gets mechanical disintegration, चीज़ें उसमें से टूट जाती है, उसमें से जो वो process है वो सारा नीचे आ जाता है. एंड व्हाट इज फर्दर हैपनिंग है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेनुडेशन. डेनुडेशन आपको पता है उस चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड देयर आर सम ऑफ द एजेंट्स दैट इज लाइक द विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, जो भी जितने भी हमारे पास लैंडफॉर्म्स एंड दैट गेट्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस डेनुडेशन एंड वेदरिंग प्रोसेस. लाइक हमारे पास एलियन फीचर्स है जिनको हम विंड फीचर्स भी कहते हैं. हमारे पास प्लेन्स है. बाय द वाटर वी आर गेटिंग डिफरेंट फीचर्स, लाइक वी हैव ऑक्सबो लेक्स, वी हैव meanders. By glaciers we are getting different types of features. These all are the denudation agents. All right, so we can say that the present landforms are very varied and diverse, and because it's of the earth movements that these various types of landforms are getting formed. And we can also say the one more important thing, it should be noted that these agents only modify, याद रखना ये जो agents होते हैं, they only modify the pattern of mountains, plateaus and plains which have been modeled by the movements of the earth's crust. ये जो हमारे पास जितने भी agents हैं, they only do a thing, they just modify the patterns. Otherwise already हमारे पास earth movements हो चुकी है, we have already given rise to a particular type of landform. उसकी वजह से these agents they only just modify the pattern. So we are going to study about some of the features which are responsible for these earth movements. So guys, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस जिनको हम हिंदी में अंतर्जात बल भी कहते हैं, दीज आर द फोर्सेस, यू रिमेंबर दीज आर द फोर्स, दे आर ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ. जो हमारे फोर्स के अंदर से एक कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे कि वे हैव थर्मल कन्वेक्शन करंट्स, रेडियो एक्टिविटी या हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ. तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज दैट देयर ऑकर्स द इनिशियल लैंडफॉर्म्स अर्थ. याद रखना स्टूडेंट्स, दिस radioactivity and thermal radioactivity and this heat trapped inside the earth, this is the process. हमको पता है there is a decaying of these elements, radioactive elements. We have this thorium, we have uranium. जब वो decay होती है, they release the heats, and because of this process and because of the thermal convection currents, हमको पता है we have denser materials that are they have just gone below, and we have the lighter materials, less dense materials, they have gone up. So mantle is asthenosphere is constantly revolving, rotating on this, moving on the lithosphere. So this process is completely called as thermal convection currents, making the magma to flow upwards from beneath the earth. And these are some of the causes by which we can say this endogenic forces. ये जो endogenic forces है, these are responsible for these causes. So we can say that हमारे पास जो radioactivity and heat trapped inside the earth, they give rise to the initial landforms. We can say that these initial landforms which are occurring on the surface of the earth, अंतर्जात बल forces भी हम जिनको कहते हैं, these forces on the earth surface are called initial landforms, क्योंकि ये सबसे पहले पैदा होते हैं. These forces are called as the initial landforms. One more thing to remember students, that these forces, since they create something, जो कि इससे कुछ पैदा हो जाता है, there occurs a particular landform. These forces create something, that is why these forces are also called as constructive forces. Remember, this can be asked in a question, which of the following forces is also known as the constructive forces. So you have these endogenic forces, since they create something, they give birth to a particular landform, they are just called as constructive forces. All right guys, so next we are gonna come on next slide. Sorry, something happened with it. All right, so after that endogenic forces, we have next type of forces. So one thing is clear, that endogenic forces simply is just nothing, that is the forces that is operating inside the earth, giving a rise to a particular landform. So other forces we are going to deal with, we are going to study is exogenic forces. Guys, this is very simple, you don't need to go into this something rocket science. This is as simple as that. The operating force something that is operating from outside, and the main source जो हमारे इसका पास है, that is the सूरज. Source is the main source of source, जो हमारा जो सूरज है, that is the main source of every energy that we have, every process we have, climatic variations we have, rainfall patterns we have, temperature distribution we have. जो भी हमारा जो main whatever the process we are seeing, the main source is the sun. These are the forces that are operating from outside. Remember this.
तो बाहरी चार्ज बल भी इनको कहते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो एड दैट दीज फोर्सेस आर कंस्टेंटली मॉडिफाइंग द इनिशियल लैंड फॉर्म्स। जो हमने इससे पहले इनिशियल लैंड फॉर्म्स पढ़े थे, जो हमारे पास एक्सोजेनिक फोर्सेस से निकले थे, दीज फोर्सेस आर कंस्टेंटली मॉडिफाइंग द इनिशियल लैंड फॉर्म्स बाय वे ऑफ डेन्यूडिंग एजेंसीज। जो मैंने आपको बोला, विंड है हमारे पास, रिवर है, ग्लेशियर्स है, सी वेव्स है, these forces are constantly modifying the already we have got is these initial landforms, so thus transforming them into the sequential landform. This thing is to remember, these are also called as sequential landforms. So आपको यहाँ पर देखना है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, these are the initial land, you can see on the diagram, these are the initial landforms that were formed because of the endogenic forces. Once this is creating, there occurs a process called denudation, and once the denudation occurs, these are being transformed into sequential landforms. So this is the force that is operating from the outside, exogenic forces. So any landform that is existing on the earth's surface is a result of these endogenic and exogenic forces. आफ्टर दैट गाइज, दिस इज द डायग्राम दैट हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइज। बहुत मेहनत करके बनाई है, प्लीज इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दिस इज अ ब्रीफ, दिस इज अ फ्लो चार्ट। तो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डील विद एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो सबसे पहले, सिंस एंडोजेनिक फोर्सेस वी आर डीलिंग विद एक्सोजेनिक फोर्सेस, मैं आपको बता दूं एंडोजेनिक फोर्सेस जो है, अंदरजात बल, जिसके बारे में हमने पहले बात की, इसमें क्या होता है, वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑकरिंग ओवर देयर। एक तो हमारे पास सडन फोर्सेस होते हैं जो काफी तेजी से चल जाते हैं, और दूसरा हमारे पास सिंपली डायस्ट्रोपिक फोर्सेस जो बहुत बहुत धीरे चल जाता है। डायग्राम को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास सडन फोर्सेस है, इनमें हमारे पास तीन प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं, तीन प्रकार की चीजें हम इसमें देख पाते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। और उसमें क्या क्या आ जाता है, सडन फोर्सेस जो कि फास्ट फोर्स, उसमें आपके पास एक तो वॉल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं, उसके पास आप दूसरा इसमें अर्थक्वेक्स आ जाता है, भूचाल, और तीसरा इसमें लैंडस्लाइड, भूस्खलन जो आ जाता है। याद रखना गाइस, दीज सडन फोर्सेस दे आर वेरी फास्ट। दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। इसमें सडन फोर्स एक पार्ट है, और दूसरा इसमें हमारे पास तीन प्रोसेस वी कैन सी, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड लैंडस्लाइड्स। इसमें क्या होता है, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, दीज सडन फोर्सेस ऑपरेट ओवर अ वेरी लेस एरिया विद इन मिनट्स। जबकि भूचाल आता, आपने देखा होगा, अर्थक्वेक नेवर ऑपरेट्स मोर देन वी कैन से दैट 2 मिनट्स 3 मिनट्स, ऑलराइट। volcanic eruptions, they're a very sudden process, very fast processes. And दूसरा इसमें जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको, जिस पर हमारा पूरा आज का टॉपिक बेस्ड है, दैट इज द डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। गाइस, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इसमें क्या होता है, याद रखिए, दीज फोर्सेस आर वेरी स्लो। जबकि हमने इससे पहले पढ़ दिया, हमारे पास सडन फोर्सेस था, दे वर वेरी फास्ट, एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेस दे आर वेरी स्लो फोर्सेस। याद रखिएगा, दीज वेरी स्लो फोर्सेस, हेंस वी कैन से दैट वी कैन नॉट फील देम, हेंस दे आर कॉल्ड एज, दे आर very imperceptible and very inexorable. That means you cannot even feel that these forces are operating, and they are very inexorable, which means they are without getting exhausted. They can operate over a very long time. And guys, we should also remember these diastropic forces give to what we call as the relief features of first order. याद रखिए, relief features of first order, this is also called as primary relief features. इस पे हमारे continents and oceans bases आते हैं. Remember guys, relief features of first order, these are formed because of diastropic forces which are very slow. And दूसरा हमारा इसमें जो और इसमें एक और चीज है, इससे हमारे पास आ जाती है लैंडफॉर्म सेकेंडरी रिलीफ फीचर्स. सो सेकेंडरी रिलीफ फीचर्स में आपके पास हमारे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कुछ प्लेन्स भी आते हैं इसमें. गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस सेकेंड रिलीफ फीचर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर. प्राइमरी रिलीफ फीचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ये दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. गाइज आगे मूव चलते हैं, डायग्राम को फर्दर समझने की कोशिश करते हैं. इसके बाद हमारे पास है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की एक और क्लासिफिकेशन है. गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आएगी, यू कैन कैप्चर दिस एनी ऑफ द एग्जाम. जितना भी आपकी यूपीएससी आ रहा है, आपका यूजीसी नेट आ रहा है, आपका कोई और एग्जाम आ रहा है, वट एवर आई एम टीचिंग, दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द बेसिक. इफ यू गाइज आर गेटिंग दिस, यू विल गेट any of the concept regarding this, you will understand it very carefully. तो guys इसकी क्लासिफिकेशन को भी समझने की कोशिश करना, otherwise you get jumbled all the things. ये कौन सा फोर्स है, इससे क्या हुआ, इसीलिए मैंने आपके लिए डायग्राम्स बहुत सिंपल तरीके से बनाए रखी हुई है. उसके बाद आगे चल के हम बात करते हैं, once these diastropic forces operate, they are being classified. इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं. वन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अपिरोजेनेटिक फोर्सेस, सेकंड इज कॉल्ड एज ओरोजेनेटिक फोर्सेस. गाइस अपिरोजेनेटिक फोर्सेस, इसको हम कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस भी बोलते हैं. मतलब इससे हमारे को सिंपल समझने की कोशिश करो गाइस. जितना मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, ज्यादा भी आप उसमें एक्सट्रीम मत घुस जाओ, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. आई एम नॉट टीचिंग यू रॉकेट साइंस, दिस इज सिंपल कंसेप्ट. अपिरोजेनेटिक फोर्सेस कम्स अंडर द डायस्ट्रोपिक फोर्सेस. जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में जो अपिरोजेनेटिक फोर्सेस है, याद रखना दे एक्ट वर्टिकली. इसमें या तो अपवर्ड